Hello students, today we are going to start with the second year course, plus 2 second year course आज start करिबा। प्रथम आमे प्रोज को जिबा ता आगुरु मु कहि रखुची जे आम चैनल रो ना जेमते आपण जानचंती इंपीरियल इंस्टीट्यूट आ एठी जदी आपण कोर्सेस बाय करिया को चाहुचंती कि कोर्सेस जॉइन करिया को चाहुचंती तो हमरो एठी पीसीएम जोटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रो कोर्स फी होची 1200 रुपीस आउ पीसीएमबी जदि बायोलॉजी इंक्लूडेड अच्छी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सहित ताल सेटा 1500 रुपीस अच्छे 1500 टंका। तो बेसी जदि आपन किछि एथरे इन्फॉर्मेशन दरकार ताहले आपण हमन को कांटेक्ट करि परिबे एंड हमरो कोर्स आराम से जॉइन करि परिबे। तो सेकंड ईयर रो प्रोस रो प्रथम चैप्टर टा होची माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। ओके, इट इज रिटन बाय जेसे ओवेन्स। सो प्रथमे टेक्स्ट को जिबा आगुरु टिके ऑथर को इंट्रोड्यूस कर दबा। जेम्स क्लीवलैंड or Jesse Owens was born on 1913 and died in the year 1980. He was an American track and field athlete who specialized in sprints and long jump. Sprints माने जो दौड़िबा and long jump रे से specialized थिले and he was a kind of athlete. Okay, he participated in 1936 Summer Olympics in Berlin, Germany, where he achieved international fame by winning 4 gold medals. तो 1936 रे जो समर ओलंपिक्स हेइथिला सेइथिरे से 4टा गोल्ड मेडल पाइथिले। कोथरे पाइथिले ना 100 meters running race, 200 meters running race, long jump and as a member of 4 into 100 meter relay race game. Okay, so ए 4टारे से गोल्ड medal पाइथिले and he was really famous in that area. Okay, तो यूनिट 1 रो वार्म अप रे कोन अछि हमको जो हिंट टा दिया जाय कि एग्जैक्टली हमें कोन डील करिया को जाउछे हम टेक्स्ट रे सेटा वार्म अप रे हमको कहा जाय थाए। The Olympic Games is the world's foremost sports competition featuring summer and winter sports in which athletes from all over the world participate in a variety of competitions. जमती कि हमने जानी छे ओलंपिक्स हुए एंड आमे आजिकली तो आहुरी भलो वे रे हमको जाना पड़ुची कि केते बेले गेम्स होची एंड किए गेम्स पार्टिसिपेट करछंती किए विनर होचंती। तो सेतले मध्य विंटर स्पोर्ट्स बहुत सारा होथिला, समर स्पोर्ट्स होथिला जो थिरे कि पोझिया माने जाई कि पार्टिसिपेट करूथिले। ओके, so in this essay we are going to talk about Jesse Owens. Like shares his experiences of 1936 Summer Olympics which is held in Berlin when patriotic feelings were running high in Germany. तो सी जेतेबेले समर ओलंपिक्स जॉइन करथिले 1936 रे से जो एक्सपीरियंसेस कोडा अच्छी से सेटा शेयर करचंती जेतेबेले कि रशिया रे पूरा हाई चलथिला patriotic feelings. However, Owens did not bother as he trusted in his abilities. तो तांको एते किछि चिंता एथि पे नथिला because he was aware of his abilities. माने से तार abilities जानी थिला. Now he tells his stunning story about forging a lasting friendship with a German, putting differences aside for the love of the games. तो एठी he is going to discuss about the lasting friendship with a German माने सेठी जाई कि केमती तांकर गोटे फ्रेंडशिप ग्रो करथिला व्हिच वाज अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप। ओके, तो से विषय रे से डिस्कस करछंती जोठी कि से तांकर गेम प्रति जो भल पाइबा सेटा साइड रे रखी कि ही इज मोर इंटरेस्टेड इन द फ्रेंडशिप ऑफ जर्मन। ओके, टेक्स्ट को ऐसे जिबा। It was the summer of 1936 जेमती कि हमें already जानी छे that summer Olympics विषय रे इथरे डिस्कस हेबा को जाउचे। The Olympic Games were being held in Berlin because Adolf Hitler childishly insisted that his performers were members of a master race. Nationalistic feelings were at an all-time high. तो सेतबेले Adolf Hitler कोन कहले that his performers are the members of
मास्टर रेस तो ये नेशनलिस्टिक फीलिंग्स देखे कि से मैंने ये जिनसटा को बर्लिन रे करैथिले एंड इट वाज रियली हाई माने सेतेबेले जो पैट्रियोटिज्म टा चलथुला कि पैट्रियोटिक वे ऑफ तमने जो नोशन थिला लोक मानको मुंड भितरे दे टुक इट इन अ डिफरेंट वे ओके तो आई वाज नॉट टू वरीड अबाउट ऑल दिस आई वुड ट्रेन sweated and disciplined myself for 6 years with the games in mind तो जी हमरो actually narrator माने जैसे ओवेन्स कहले that he was not at all worried काहे कि ना से 6 years हेलानी गोटे disciplined life सहित निजर rule regulation सहित games practice करूथिले okay while I was going over on the boat all I could think about was taking home one or two of those gold medals तो सी already mindset करके आसी थिले that if he is going to go back to his home he must have two of the gold medals माने दीटा gold medal तांको जेमती हेले भी नहीं कि जिबार अच्छी now I had my eye especially on the long jump तो सी पूरा sure थिले कि कोउथरे मु पाए न पाए मु long jump रे निहाती गोटे gold medal पाइबी A year before as a university student, I had set the world record of 26 feet 8 and a 1/4 inch. Okay? तो सी गोटे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी बनै सारी थिले जतबेले सी गोटे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थिले सो ही वाज रियली श्योर एंड कॉन्फिडेंट से सेतिकी श्योर थिले सेतिकी कॉन्फिडेंट थिले दैट सी एटलीस्ट किछि न हेले लॉन्ग जंप रे जेमती हेले भी गोल्ड मेडल गोटे नहीं कि जिबे बिकॉज तांको रिकॉर्ड कोन थिला इट वाज 26 feet 8 1/4 of the inches everyone kind of expected me to win that Olympic event hands down तो जतबेले हमें ऑलरेडी शोकेस करि दै थाउ कि yes this is how situations are going to go जदि सबू भलरे चलथुबो तो लोक ऑफ कोर्स आपन को ऊपर सेतिके भरोसा रखिबे तो समस्त जानथिले जेतु सी गोटे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी बनै सारचंदी ही इज गोइंग टू विन द रेस I was in for a surprise when the time came for the long jump trials. I was startled to see a tall boy hitting the pit at almost 26 feet on his practice leaps. मैंने सी सेतबेले जतबेले जाई कि पहुँचिले सी देखिले कि ऑलरेडी सेठी गोटे पिलाटे थिला जी कि तार प्रैक्टिस जंप रे 26 फीट तो सी मारी ही दोथला सो ही टर्न आउट टू बी अ जर्मन नेम्ड लूज लॉन्ग तो तांकर ना कोन थिला गोटे जर्मनी रो ये थिले सी तो तांको ना थिला लूज लॉन्ग नाउ आई वाज टोल्ड दैट हिटलर हैड केप्ट हिम अंडर रैप्स evidently hoping he would win the jump तो already तांको एथि पई ही रखा हितला because हिटलर ऑलरेडी जानी सारी थिले कि ये जहा हेले भी जितिबो गेम टाको ओके I supposed that if Long won I would add some new sport to the Nazis' Aryan superiority theory after all I am a Negro a little hot under the collar about the Hitler's ways I determined to go out there and really show their furor and his master race who was superior and who wasn't तो सी ऑलरेडी मुंडर भाबी सारचंदी कि मु लॉन्ग जंप जितिबी माने मु जितिबी तो ही इज सेइंग दैट आई एम रेडी टू गो फॉर अ लाइक एग्जामिनेशन तो सी कहले ए जहा हेले भी मु जाई के सेठी छिडा हेबी एंड आई एम गोइंग टू विन सो परफॉर्मर्स रे माने कोन कॉम्पिटिटर्स और एथलीट्स ओके here माने 8 ही परफॉर्मर्स रे माने होची सेया काहे ना वी आर टॉकिंग अबाउट ओलंपिक्स गेम्स एक्सेट्रा नेक्स्ट होची मास्टर रेस सुपीरियर टू ऑल रेसेस हिटलर्स नाजी थियरी क्लेम दैट आर्यन रेस इज अ मास्टर रेस ओके सो जदि 26 feet 8 1/4 of inches को हमें मीटर्स रे कन्वर्ट करबा तो इट इज 8.13 meters आउ 26 feet होची 7.9 meters hands down माने कोन with little or no effort okay जतबेले hands down हम कहू कि hands down he will dance well माने हम जानी जे टिके जदि से भलो एफर्ट दे दबो ताहले से निहाती से डांस कंपटीशन जितिबो जेमति कि यांको कुहाइतला जे जत्ते जा हे गले भी से कोथरे जितंतु न जितंतु he will win the long jump race
startled माने greatly shocked or surprised. startled माने हठात कि गोटे जिनस हो तो निहाती आमे सेठी टिके सरप्राइज हेई जिबा. under wraps माने होची secret. Nazis माने होची the members of Hitler's the National Socialist German Workers Party. तो सेटा होची NSDAP. Aryan superiority theory कौन? The theory that Germans who are the Aryans are superior to all other people. माने Aryan community को जो माने belong करुथिबे से माने जर्मनी रे जो भी लोक थांतु तांकोठु ऊपरे ही रहिबे. Therefore किए से होचंती the leader in German who used almost exclusively as the epithet for Hitler. एपिथेट माने कौन कि जनक जगार आम जनकर जदि ना यूज करुचे तो सही टर्म टाको आम एपिथेट कहू. तो थिंक इट आउट रे अच्छी. Why were the nationalistic feelings running high during the 1936 Summer Olympics in Berlin? Because of Hitler. Okay, Hitler already कही देइथले that yes, this is the period where the patriotism can be showed. Okay, तो सेठी पे से बर्लिन रे करेइथिले and that was the reason why the nationalism was high on that period. I wasn't too worried about all this. What was this referred to? Hitler's beliefs or winning a gold medal. तो एठी से निजे ऊपर कहिथिले that मु एते worried नथिली because I know I am going to win something because I already have one world record on my name. So why wasn't Owens worried? Owens एथिपे worried नथिले because से 6 months हेलानी practice करथिले. आ से जानिथिले जो ए 6 months से practice करिसंदी he is going to win the show. Why did everyone expect Owens to win the long jump easily? कौन पाई ना से ऑलरेडी गोटे रेस जीति सारचंदी गोटे वर्ल्ड रिकॉर्ड तांको नारे ऑलरेडी हेई सारिछि सेइथि पई से चाहि तांकर जतिक भी सांग माने थिले कि तांकर जीए भी तांको माने सराउंडिंग रे थिले से माने ऑलरेडी एक्सपेक्ट करि देइथिले जो ओवेंस जितिबे. Now what was the surprise that awaited JC Owens in the Berlin? तो JC Owens जे कि कौन देखला as he was knowing that he is already a champion सीए भाभी थिले तो जमती हेले भी जितिबे किंतु सी जता बेले देखि देले कि ऑलरेडी गोटे प्रैक्टिस जंप रे जने जर्मन प्लेयर अछंती जे कि तांकर रिकॉर्ड पाखा पाखी रो लेंथ मारी दउचंती. देन इट वाज अ सरप्राइज टू हिम. व्हाट डिड ही लर्न फ्रॉम पीपल अबाउट लॉज लॉन्ग दैट ताकू ऑलरेडी हिटलर रखी देथिला to use during Olympics so that no one else can win the race. Do you think Nazis' Aryan superiority theory meant that Germans were superior to Negroes? How did Owens feel about it? Angry or bothered? So he was basically angry because I may say जो last paragraph पढ़िले सेथिरे तांकर जो कहिबा स्टाइल जो भी जिनसटा बुझेबा स्टाइल it was a kind of reaction to anger. Okay, so what made Owens determined to beat Loz Long? तो सी proof करिया पई that no, not always the thought process is going to win. तो already जेहेतु रशियंस माने जर्मन्स माने भाबी सारी थिले कि लॉज लंग जे अछंती से जितिबे तो से जिनसटा ऑलरेडी ता माइंड रे थिला कि नो इट इज रॉन्ग. जदी सेमती अच्छी तो I am determined that I am anyway going to beat him in the race. Second unit रे कौन अच्छी? Anger is the worst enemy of an athlete. तो of course जमती कहा जाए कि रागटा सबु जिनस नहीं कि डूबी जीव सेमिति गोटे एथलीट पाई भी रागटा is a kind of enemy हला. An angry athlete is an athlete who will make mistakes. Okay, तो आमे जतले रागु सेतबेले आमे बुझी पारु नाही कि एग्जैक्टली हमको कोन करियर अछि. करेक्ट. तो as any coach will tell you I was no exception. तो सी भी सेया कहिले कि जमिति सबु कोच कहबे एंगर होची गोटे जिंस जोटा कि गोटे लोक को नै कि डुबे से सेम जिंस सी भी कहिले. On the first day of my 3 qualifying jumps, I leapt from several inches beyond the takeoff board for a no jump.
On the second jump I was even worse. तो सी कौन कहले ऑलरेडी तीनटा जो जंप निया जाए ता देहरु फर्स्ट तो जहाँ गला सेकेंड ताठू वर्स थिला. तो से निजो को क्वेश्चन पचारे कि डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस. आई थॉट बिटरली. से ऑलरेडी निज ऊपर चिड़ी सारे कि मुझे एटा 3000 माइल्स दूर को आसी टू फेल इन ट्रायल्स एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ. माने निज को क्वेश्चन कले सी इज इट व्हाट आई एम वर्थ ऑफ. मुझे दूर आसी. Walking a few yards from the pit, I kicked disgustedly at the ground. Suddenly, I left a hand on my shoulder. I felt a hand on my shoulder. I turned to look into the friendly blue eyes of the tall German long jumper. He had easily qualified for the finals on his first attempt. He offered me a firm handshake. तो सी जिते रागी की ग्राउंड को किक कले पछरे किए थे गोटे जर्मन प्लेयर जी के ऑलरेडी फर्स्ट राउंड रे क्वालिफाई कर जाइतले फाइनल्स पाई. तो ही वाज अ जर्मन विथ अ ब्लू आई. ओके सो ही ऑफर्ड मी अ फर्म हैंडशेक. तो तांको हैंडशेक पे हाथ बढ़ेले. जेसी ओवेंस आई एम लॉस लॉन्ग. आई डू नॉट थिंक वी हैव मेट. ही स्पोक इंग्लिश वेल दो विथ अ जर्मन ट्विस्ट टू इट. माने टिके जर्मन ट्विस्ट था कि इंग्लिश रे कथा हेले. आई एम फाइन. द क्वेश्चन इज सॉरी ग्लैड टू मीट यू आई सेड. Then trying to hide my nervousness, I added, how are you? So, take a nervousness luchia pe se next question pacha dele je how are you? I am fine. The question is how are you? तो एठी आवन कहउचंती. What do you mean by that? Something must be eating you, he said, proud the way foreigners are when they are mastered a bit of American slang. You should be able to qualify with your eyes closed. तो सी सेठी कहले कि मते लागु जे तमे डरी जाउछ. So there is something that you need to do, that you have to qualify with your eyes closed. Believe me, I know it. I told him, and it felt good to say that to someone. तो सी कहले कि मु जानी छी से कथाटा. So for the next few minutes we talked together. I didn't tell long what was eating me, but he seemed to understand my anger and he took pains to reassure me. Although he had been schooled in the Nazi youth movement, he did not believe in Aryan supremacy business any more than I did. तो already तांको भितरे गोटे kind of relationship build हो जाइतला जो तरी के से निजे जणिया को चाहिए निजे से कौन फील करूचंती but somehow सी सेटा बुझी जाइथिले के ऑलरेडी सी जेतु नाजी यूथ मूवमेंट रो स्टूडेंट थिले सी कहबा कथा कि सी सते से जिंसटा को बिलीव करंतिनी दैट आर्यंस आर सुपीरियर. ओके सो we laughed over the fact that he really looked the part though. An inch taller than I, he had a lean muscular frame, clear blue eyes, fair hair. एगुड़ा सब हमें तांकर description रे लिखि परिबा जे से केमती देखा जानती. And strikingly handsome face. Finally, seeing that I had calmed down somewhat, he pointed to take off the board. तो सी कहले कि ऑलरेडी से के हैंडसम थिले, ब्लू आईज थिला, टिके गुड लुकिंग थिले. तो सी जतबे देखिले कि ये टिके काम ही आसलेनी, टिके बेटर ही आसलेनी. तो ही सेड टेक ऑफ द बोर्ड. लुक, ही सेड, why don't you draw a line a few inches at the back of the board and aim at your making take off from there? You will be sure not to fall, and you certainly ought to jump far enough to qualify. What does it matter if you are not first in the trials? Tomorrow is what counts. तो सी ऑलरेडी कहले कि सेमती किछि भी नहीं कि आज हेलानी माने काली हबनी. तो तू गोटे काम कर, टिके आगुरु मार्क कर दे था जेमती कि तू दौड़ी के गला बेलकू you will not get disqualified. Okay. Suddenly all the tension seemed to ebb out of my body as the truth of what he said hit me. Confidently, I drew a line a full foot behind the board and proceeded to jump from there. I qualified with almost a foot to spare. माने तापर से qualify करी गले. Eating माने होची agitating, ताको हैरान करची से जिनसटा. ओके disgusting माने कौन? Disgustedly with a strong feeling of dislike. माने गोटे जिनस को हम इसलिए dislike करूँ आमो जो भावटा आसे that is disgust. Reassure होची to say something to make somebody less frightened. तामने आमको कहा को जदि reassurance दबार अच्छी, कहा को बुझेबार अच्छी कि तो डर नहीं, already everything is going to get set. Okay. What does a coach say about any like that angry athlete?
तो कोच ये कहते दैट जदि किसी वर्स्ट एनिमी गोटे एथलीट थिबो तो सी होची एंगर. What were the results of the first two qualifying jumps for Owens? तो दीटा करे से फेल करिथिले. Why did Owens kick the pit? Because he didn't qualify and he was disgusted by his own work. Who offered Owens a firm handshake? Was he friendly or hostile? तो सी friendly भी थिले, hostile भी थिले. It was Love. Now Law's Log already तांकर गोटे माने friendly appearance थिला. Why did Long speak to Owens during the trials? Did he mean to make friendship with Owens or to find out what was troubling him? तो सी जेतु जानिले कि गोटे player already agitate ହେଇକି ଅଛି and he is not understanding what to do. He went there to know and find out what was troubling him. He really looked the part. What does this mean? Does it mean Long was trying to play the part of an Aryan or he looked as if he belonged to a superior race? तो सी कहले कि जेहेतु से नाजी कम्युनिटी रे ऑलरेडी माने पढ़ी थिले बट तांका पाखरे सेही किछि कैरेक्टरिस्टिक्स नथिला तो सी टिके समस्तठो अलगा थिले. हाउ डिड लॉज लॉग हेल्प जैसे Owens in qualifying the final jumps? तो सी ताको ट्रिक बतैले कि तू जदि एमिति करिवो ताहले तू इजीली क्वालिफाई हे जिवो. Tomorrow is what counts. What did Long mean by this? Now, does he mean that Owens would win the next day or their performance the next day would matter much? तो ये कौन लिखा है कि tomorrow is what counts. ये तो qualifying marks थिला, like qualifying round थिला. तो काली main round रे जदि जने भलो करिवो तो सेटा मैटर करे. तो सेति में किछि डरिया दरकार नहीं. Go and get yourself qualified first. Did Owens qualify for the final jump? How did he do that? जेमिति बतई थिला ताको लॉज लॉन्ग सेमिति ही सी यूज करके फाइनल जंप रे क्वालिफाई करिला. तो एबे हमरो दीटा को यूनिट सरी छि. तो आपण मन को जदि क्वेश्चन आंसर्स दरकार कि आपण माने केमति लिखिबे जेहेतु मु एठी केवल डिस्कस करू छि तो आपण माने कमेंट सेक्शन में जणाइले निहाती हमें क्वेश्चन आंसर आपण मन को प्रोवाइड करिवो. एंड जदि किसी भी डाउट होची तो सही जिनसरा लिखिबे. तो जो दिन आमे डाउट क्लियरिंग क्लास करिबा तो सही दिन आमे क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कशन कर दबा. सेति जे आपण माने एबे पढंतु यूनिट 1 एंड यूनिट 2. नेक्स्ट क्लास आमे कंटिन्यू करिबा विथ यूनिट 3. ऑल द बेस्ट.